Hello, we are back. गेम की ऑडियो आ रही है। गेम की ऑडियो आ रही है। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम थोड़ा खेलेंगे, बहुत दिन से खेला नहीं, और पहले इवेंट करेंगे। ओके, चेक करना पड़ेगा, डबल तो आवाज़ नहीं आ रही, सब चेक करके करते। ओके, डबल आवाज़ नहीं आ रही, स्टार्ट कर सकते। ओके, तो पहले इवेंट कर लेते हैं। आज तो इवेंट कंप्लीट हो। ओह, स्टेजियन आ गया ना। ओह माय गॉड, स्टेजियन दिखना था क्या? आज के टाइटल चेंज करना पड़ेगा फिर। स्टेजियन ऑन स्लॉट करेगी। पहले इवेंट कर लेते। पहले कॉम्बैट इवेंट या बाद में? पहले कर लेते। कॉम्बैट इवेंट। ओके, इसका फरीना टीम यूज़ करना पड़ेगा ना। आफ्टर फ्रोजन ग्रेट डैमेज इंक्रीज। प्लीज फरीना टीम। एस्कॉफिया कहाँ है? ठीक, ओके, शायद से स्टेज नहीं करेगा। और आज की पिंग अच्छी है, वैसे अच्छी है। Up to the freezer! Goose on the loose! Suffer the wrath of me! Another star goes out! Annihilate! Ha! Ha! और कॉम्बैट के आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तो Get to work! Shower me with the... Let my name echo in song! A burst of flavor! ओके, जीन की बारी। Fulfill our pact! Strike a pose! A little moose boot! Time to shine! Goose on the loose! Extinguish! Yoo-hoo! Let the world come alive! Up to the freezer! A burst of flavor! ये इवेंट वैसे भी इजी है। इसको एम भी नहीं होगा, शापा जाना। Strike a pose! A dash of frosting! Time to shine!
अल्ले कोट भी तो नहीं करें। The pinnacle of excellence! Fearless! Paradigm shift! Get to work! Let the world Let's go for it, let's collide! A little amuse-bouche! Yoo-hoo! वापस आ गए। Strength pose! Time to shine! A burst of flavor! Off to the breeze! I think we are done. Uh-huh. और फिर देखते हैं। ओह मेरा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ गया। नाइस, किसी ने सब्सक्राइब किया। थैंक यू सब्सक्राइब के लिए जिसने भी किया। कैसे बढ़ा सब्सक्राइबर काउंट किस स्ट्रीम में? इट रियली नाइस, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा फाइनली। ओ सब्सक्राइबर का नेम भी देख सकते, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। रिसेंट लाइफ टाइम लास्ट 7 डेज नहीं दिखा रहा मेरे को सब्सक्राइबर का नेम। थोड़े दिन में अपडेट होता है वैसे तो देखते थोड़े दिन में बताऊंगा मैंने किसने सब्सक्राइब किया। ओके नेक्स्ट राउंड चास्का ओरोरोन माविका लाली। ओके चास्का और ओरोरोन से तो क्या ही होगा। Rise with the sun! Not too far now. Go! You're free now! Bullseye! Fire in the hole! Pyroclastic surge! Rev the end! Show no mercy! Farewell! Ha! ओके वह मैं इतने धीरे क्यों आ रही है? चास्का को लग गया उसका डैमेज। Fulfill our pact! Tell me what you see! Wrath from the sky! Take me up! अच्छा इससे मीटर फील होता है। माविका के अटैक से मीटर Locked फील on! Hold on to your hats. Burn it down! Get to work! मैं चास्का बोल Not too far now. Go! You're free! एनिमे डिफेंस Light up अच्छी the है। blazing sun! Yeah! ओके ये तो स्पैम करने में मज़ा आ रहा है।
वो अपडेट भी नहीं हो रहा था। Rise with us. Be free. Time to say hello. Wrath from the skies! Ha! एक और बार स्कैन करने के लिए Farewell. Light it up! Fire in the hole! Let's fly! Open fire! Locked on! Bullseye! Locked on! एक और बार स्कैन करने का मौका। Take me up! Bullseye! Bullseye! इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स लाइक स्पैम करना फन दो। ओह सेम अमाउंट पॉइंट्स। ओके लूना रिएक्शन लूना चार्ज कॉलोमीना ओके ये लूना टीम में Annihilation mode. Rush attack! You on this! A moonlit night for all. Be silent. Observe. Night falls. Be silent. Do you fear the dark? A new moon rises. Insulation chamber deployed. Preparing for dust up. Go claw! Look, the rainbow! इनमें तो 3 एंगल को मारना है। ओह फ्लेम्स फॉल Cleanup sequence initiated. Converge. Observe. Be silent. Observe. ये साइलेंस में बोला इसने Insulation chamber deployed. और ऑफ Annihilation mode. You want it? The night comes. तो जस्ट स्टार्टिंग ज़्यादातर सेकंड टेस्ट Be silent. Observe. A moonlit night for all. Beware the creatures of the night. सामने से अटैक किया करो Preparing for dust up. You want it? Be silent. Do you fear the dark? To dust. Are you quite finished? हम नेक्स्ट राउंड के लिए गेम ऑडियो कम कर देंगे
सेफ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके Defensive mode engaged. Annihilation mode. Close your eyes. The long sleep beckons. Be silent. To dust. then फाइनली डन हो गया है और ऊपर वाला क्लेम नहीं किया मैंने। गेम ऑडियो कम कर लेते हैं। ओके डेली सुबह हो गए। नाइस होमलैंड दो इवेंट हो गए। ये फैल्कन वाला इवेंट कर ले या टी वाला इवेंट कर ले तो ओके सबको अनलॉक हो गए ना सारे। चेक कर लेते हैं इस बार कौन आएगा। So you're looking after the drink stand now. If I'd known sooner, I would have stopped by this morning. Thanks I've got to say, I'm getting curious. I've heard a lot about your mixology skills. Oh, I wonder what kinds of drinks you can mix with the ingredients Glenfiddich has prepared. I don't have much of a choice. It's just one thing after another right now. First off, the Knights of Favonius annual combat assessment is coming up. And this year, the standards are higher than ever. As the captain of the reconnaissance company, I have to lead by example. At the very least, I need to rank as one of the top 3 captains in the practical portion. oh. So, I've been intensifying my training lately. Being a descendant of sinners means I have to work hard to maintain my position. I'll have you know I've never once neglected my duties. Anyway, on top of all that, my duel with Miss Clorand required a lot of focus and energy. Learning how to turn defense into attack and seize the initiative when facing a combined assault from sword and musket. Even now, I'm still chewing through the details. But in the end, the exchange went well, and both parties learned a great deal. Never mind writing reports from 6 different perspectives. I feel like there's enough worth mentioning to write 24 of the things. Sounds like you could do with a very stiff drink. Oh, I sure could. Anything that'll perk me up would be welcome. I'll leave the details to you. Okay. Twinkling starlight. Add fruit wine कहाँ है? Where the fuck? Fruit wine. Like हाँ. नहीं. Fruit wine. Fizzy water. Wolf horn. Fruit wine कहाँ है? Like मैं read नहीं कर पा रहा. अच्छा ये रहा. Cut into small bits. Small bits. Okay. Almost miss हो गया था. Shake heartily. Shake. कौन से कप में चाहिए? ओके टॉपिंग्स सी सॉल्ट
आई गेस उसको पसंद नहीं आएगी, फिर हम बात करेंगे तब पसंद आएगी। तो पहली ड्रिंक बनाने का ट्राई क्यों करता है, पहले बात ही कर लिया करो। One twinkling starlight for Captain Eula. Hope you like it. Judging by your confident tone, I'm certain I will. Well then, I'll make sure to savor this thoroughly. Not bad. Sweet and tingly, with a delightful airiness. The fizzy water really brings it to life. I suddenly feel full of vim and vigor. But just one glass doesn't quite scratch the itch. How about something with a bit more bite? Not strong enough for you. Don't hold back. You don't need to worry about putting me on the floor with nothing but a couple of drinks. Works for me. The first company hasn't assigned me any paperwork for tonight, so I'm free to catch up and try your new creations at my leisure. Okay. Distance no mountain, drink on the table. That's right. The merchant I got it from called it Romaritime flower fruit extract. It has a very unique smell. Here, have a bottle. Oh, it's a necessary courtesy. In that book Miss Magistus lent me, The Blade Dancer, 20 years on, it says, after a duel, a Fontanian swordsman will politely invite their defeated opponents to a banquet. To properly play host to Miss Clorand, I searched for quite some time to locate a rare goods merchant in Dorman Port who sold this juice. Dorman Port. शायद से next update में? Maybe. I had my doubts at first, too. But Amber said something that makes a lot of sense. She said that even if this custom doesn't really exist, following it still shows I've made an effort to understand Fontaine's cultural heritage. तो Besides, Escoffier who doesn't भी like Fontaine trying में- new things, Fontaine right? बोलो must admit. When I gave it to her at our post-training banquet, Miss Clorand really did enjoy this juice. Ah, unusual juice. A memorable experience. This is content. Have you been stationed here? Yes, I have. For a while, the situation there was difficult. A gang of outlaw engineers was messing about with some sort of mechanism control technology, attempting to manipulate ruin graders so they could rob merchant caravans. Oh, तेरी. To make matters worse, several veteran knights who had been stationed at Dorman Port were transferred to my squad, and they weren't happy to be taking orders from that Lawrence girl. Leading them on this mission was quite eventful. It took 3 weeks of stealth operations in the snow, with no fires to keep us warm, before we finally located the enemy's stronghold. Those veteran knights faced the bitter cold and were almost taken down by the enemy's smuggled battle mechs. Fortunately, the battle went our way, and they had no choice but to acknowledge my abilities. Did you catch it? Me? I'm completely fine. But thank you for your concern. It was mentally tiring for sure. But fortunately, the operation wore them down far more than it did me. They won't be questioning my authority again anytime soon. If any new recruits try to make my life difficult, I'll just have my veterans give them a few friendly pointers. I guess you could call them a permanent solution, huh? Yep. Eating on duty. If you want to know what I've been eating recently, I'd better start by mentioning the logistics company's latest revolution. They launched a diet improvement initiative and started distributing a form of standardized canned food to knights operating in the wilderness. Canned food. In the past, we only had dry rations. Every mealtime, we had to set up pots and campfires, roll dice to choose a cook, and take turns standing guard. In all honesty, it was a bit of a hassle. Now we just need to bring our standard field rations, comprising of 5 cans and 9 paper packages. We can heat the cans by the campfire, and then we're ready to eat. IEMs खा रहे हैं. ये MRAs बोलते हैं ना उसको शायद से. Sounds like. You did say sounds like, right? Our canned food supplier has quite the stellar reputation, and their regular meals are indeed quite good. Oh. The problem is, in order to meet preservation standards, they have to make their military-grade meals way too salty. The vice captain of the 5th Company,
who has a somewhat dry sense of humor, went so far as to say, "This food's bad enough to bring down the wrath of Li Yue's stove god." Stop. In any case, after eating it for a week, my taste buds have gone completely numb. You can hardly blame the logistics company. After all, it is hard to please everyone. Our feedback has already been submitted, and they should be working on fixing the issue. Of course, Okay. having fresh meals prepared in camp by a dedicated company chef is still the best option. Eaten too many, say. Okay. Unusual drink. Eaten too many soul foods. Restore memorable experience associated with the unusual. No, eaten too many salty food. रुको associate with a memorable experience. शायद सा हो गया. अच्छा मैंने एक चीज बात ही नहीं की थी. Oh my. To be honest, before we crossed swords, I was feeling eager, but also a little nervous. Oh, Miss Cloran's combat style comes from the mysterious Marechaussee hunters. In the library, there are some old Fontanian newspapers from hundreds of years ago that give some idea of how formidable an organization it was. A more recent newspaper claimed that Miss Cloran was an orphan from an underwater kingdom, and that before battle she would perform rituals inviting spirits to possess her sword. Certainly, from my own experiences, Miss Cloran's abilities more than match those descriptions. Incorporating elements of swordsmanship into a drink. A commemorative cocktail at a time like this sounds nice, but how do you plan to express something like sword? Want to imagine honor still to the but I price on their precious saints and pressure. That definitely matches the description I read in that book. Nice. That's right. You really know your stuff. I doubt there's anyone else in all of Tevat who could come up with such a perfect metaphor. Okay. In other words, emphasize forceful impact. There's no need to make it sound so fancy. It's just an aristocratic variant of Favonius bladework. Firewater. In recent years, firewaters gained popularity the world over, following in the wake of prosperous Snezhnayan merchants. These days, almost every tavern has a signature drink that uses it as a base. You really are good. Why don't we try replacing the fruit wine with firewater? As for the alcohol content, that's not a problem. Plenty of the expedition team may have drunk themselves senseless with firewater. But me, I'm full of confidence. Every nation fighting style is different. Recipe बन गई. Start mixing. Brilliant. I'm looking forward to seeing how you do. Okay. 2 second. हाँ. Fire water.
Clementine juice flower here and cocoa. Cut into any size of pieces. Small में cut करते हैं. Okay, perfect. Shake hardly. Medium goblet or large goblet? Master goblet. कौन सा अच्छा दिखेगा? मास्टर या मीडियम ही अच्छा दिखेगा. ऐसे स्टार स्ट्रॉन्ग. ओके लेमन अच्छा दिख रहा है इसके साथ. Here's your all-new Seafoam Sword Song, mixed to meet your personal preferences. Oh my, what beautiful colors! And you even added my romaritime flower fruit extract. Yep. The aroma is perfect, and I can smell the alcohol, but it doesn't stifle the fruity fragrance. Can't wait to hear what you think. Give me a moment to come up with the right words. I need to think carefully. Okay. I know it's unbecoming of a lady, and a proper connoisseur would savor their drink slowly. But I'm sorry, this is just too good to be true. Nice. Can you mix me another? Of course. Feel free to order as many as you like. You lost in friendly conversation. Drunk, you Oh, no, what was I going to say? I've completely lost my train of thought. Whatever. I feel fantastic. This cocktail. Oh, it's the best I've ever had. I think I'm gonna head home and get some sleep. Maybe you should have gone even. Don't worry about me. This is the happiest tipsy I've been in years. I'm still far from being drunk. Nah, she's drunk. By the time I've written up those reports for my exchange with Miss Clarend, I'll have been on duty for 3 months straight. Jean, the acting grandmaster. Isn't it about time she gave me some time off? I won't be forgetting this injustice in a hurry. You mark my words. So drunk as the traveler to be. Okay. Next story. ये तो हो गया. को ये करे या दूसरा चीज करे. यही करते हैं. पूरा ही कर लेते हैं. स्टार्ट पिक्सिंग. अब कौन आएगा देखते हैं. Suspicion confirmed. While patrolling the area, I was sure I'd sensed a familiar presence, so I came over to take a look. And sure enough, here you are. Hello, Chlorine.
If Miss Charlotte were to see you like this, I'm guessing she'd take 100 pictures and write up a report. Sword-wielding traveler's secret side hustle. Exclusive cocktails from Tevat's Explorer Extraordinaire. You'd make the front pages of every major newspaper. And there'd be crowds of Fontanian tourists flocking to your drink stand, causing gridlock on the streets of Mondstadt. I think you're a little bit too romantic. Luckily for you, I turned down Miss Charlotte's request to accompany me here, so you're unlikely to be seeing any scenes like that. Let's quietly celebrate this moment of peace. And on that note, I'd like a caramel blaze. That look on your face tells me you have a lot of questions you want to ask. Calm and effortless. I'm shocked to learn you're a real pro at this sort of thing. Oh. पहली कस्टमर जिसको पता है क्या चाहिए. Fire water, caramel, cocoa. Okay, next. Cut into small pieces. Shake properly. Yo, ये bubbles अच्छे बने. L. Oh, nice दिख रहा है. Your caramel blaze is ready. Try not to drink it all in one go. It sure lives up to its name. The color reminds me of a raging fire, while that aroma really hits you head on. It's quite strong. I'm all right. I just need a little time to get used to it. As I recall, the last time I drank alcohol was at a wine tasting event that Navia invited me to last year. I only had a small sip of Sassica wine, and it was nowhere near as strong as this concoction of yours. So basically, you don't drink it all. Don't force yourself to drink it if you don't want to. From a purely rational perspective, alcohol can cause dizziness and impair one's ability to work, so it's best avoided altogether. But when Miss Farina saw me off at the docks, she mentioned that Mondstadt is the land of wine and poetry. Since I'm here, I thought I should at least try the local specialties. Miss Farina. Farina ने इससे बात की. Yes, after so long mention किया है Farina को. That's interesting. As long as you're extreme. In fact, Captain Eula, whom I sparred with earlier, has quite the refined taste for fine wine. She even gifted me a bottle of Romaritime flower fruit extract, which is no longer produced in Fontaine, and can now only be found overseas. Out of the utmost respect for her skills, I feel compelled to deepen my knowledge of Mondstadt's wines. Let me think carefully before I mix another drink. I truly appreciate all the trouble you're going to. Another guest from Fontaine. By the way, Miss Emily was here too. Huh? Does that mean she's already finished her commission? Well, she's certainly efficient. Once I return to Fontaine, perhaps I can let Sigewin know that I'd be happy to purchase her latest perfume. Oh, it sounds like you know her quite well. I'm not sure I'd say that. On my way to Mondstadt, we happened to take the same boat. Oh. Naturally, we got to chatting. I've often heard Sigewin praise her work. After conversing with her on the journey over, I must say, she is indeed a rare and refined individual. Refined? She's gentle and composed,
yet keeps others at a distance. Perhaps it's due to her profession. I find this approach ideal. It allows one to maintain a lasting sense of inner peace. Sounds like you want me to arrange a gathering together. Oh, thank you, but there's really no need to set anything up. Our work rarely intersects, and our social circles hardly make for a Venn diagram, if you know what I mean. Best to just let things take their natural course. Okay. Similar taste to memory. What do you usually drink? When I'm working, I often drink coffee. But with meals, I prefer a lighter tasting drink, like Buell fruit juice. Since I eat a lot of meat, the slight acidity of the juice helps balance out the greasiness. Over time, I've grown accustomed to the sour taste. After the swordsmanship exchange, the Knights of Favonius Yes, rather ma'am. kindly treated me to some traditional Mondstadt cuisine. I had 8 different meat dishes, and all of them were excellent. The portions were huge, and only the highest quality cuts were used. Everything was cooked to absolute perfection. Of course, there was still room for improvement. When catering to tourists, the sticky honey roast and pile 'em up might benefit from a slightly lighter sauce. Sounds like treachery to a feast. I've certainly tried all the red meat dishes. I think I've had enough calories to sustain 3 To be honest, I can still taste the grease. Okay. Let me There tell you must be a way to cleanse my palate. एक मिनट साउंड कम कर देता हूँ मैं मेरे को भी लग रहा था साउंड ज़्यादा है या ओके साउंड कम कर दिया अब Mondstadt scent. I've seen a little. I took a stroll around the city the first day I got here. Okay, sound of say. Navia's done some rather extensive research on this place. Many of the scenes and illustrations for the tabletop troupe were inspired by views of Mondstadt. However, the way she describes the atmosphere in her world building is quite different from the real Mondstadt. The deepest impression I've got since arriving here is one of swords and shields. Swords and shields. Swords and shields इसको क्यों लगेगा? इधर तो कोई shield भी use नहीं करता. Perhaps because I've mostly just visited the blacksmith and the training grounds. Recently, the newer weapons and armor produced in Mondstadt have been created using a completely different heat treatment process from those in Fontaine, Carbon with a fiber. higher carbon content in the surface layer. Oh, While this has slightly reduced their overall toughness, their impact resistance has greatly improved. These newer weapons give off a smell like overbrewed coffee. overbrewed coffee. Quite serious. Perhaps it's because that scent gave me such a positive first impression. You see, Fontaine's signature metalwork is often coated with a protective agent that contains Marcotte. Over time, the faint fragrance becomes overly sweet. And for some reason, it makes my teeth feel funny. I don't imagine the scent of Mondstadt's swords and shields would cause the same level of irritation. Like C4 पे है गेम की ऑडियो मेरी. Damn, 4 से 2 पे करूँ या मेरे को तेज बोलना पड़ेगा शायद से. ठीक है, तेज ही बोल लेंगे और क्या जा रहा है. मेरे को सुनाई नहीं देगी फिर गेम की ऑडियो 2 पे किया तो. Well, I definitely learned something new today. Of course, there is a solution to this problem. हाँ, मैं माइक के दूर रखा हूँ मैंने माइक थोड़ा.
The next time you find yourself in Fontaine, there's another protective agent I can recommend. If you also dislike being bombarded with sweetness, this protect... स्टेशन ऑनस्लॉट ट्राई करेंगे इसके बाद हम नया स्टेशन ऑनस्लॉट आया ना वो भी ट्राई करना किसी और ने ट्राई किया है क्या अभी तक जसमैन तुमने ट्राई किया है Indeed it is. The knights codenamed Hazelnut 3 and Hazelnut 5 gave me this crest. I must say, it's exquisite. They told me the design has only just been finalized. Apparently it's only... You're not wrong. But I'm certain you'll get to know them in time. After handling my affairs, they headed to the tavern for a gathering, saying they were drinking barrels of beer the night before, yet being able to work with clear minds the next. So what you're saying is, while Mondstadters may seem carefree, they actually have an admirable ability to know their limits when it comes to drinking. Wait, कौन सा potato enemy? जो अभी नॉट क्राई में नया आया था वो लाइक आई थिंक मैं कर सकता इस बार फियरलेस कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो तो ओके न्यू टॉपिक Are you already planning? Based on my previous experiences with alcohol, I guess my tolerance is similar to Emily's. So when the time comes, I think you'd... Yep, co-op कह सकते हैं ज़्यादा हार्ड हुआ तो फाइनली इंग्रेडिएंट्स मिल गए ड्रिंक बनाते हैं अब All right. I'll make sure I'm mentally prepared. Even if it's still a bit strong, इसके बाद ही I'll do चलते my हैं। best. इवेंट तो बाद में भी कर सकते हैं अभी भी होली है हैप्पी होली जसमैन अभी भी होली है तो अभी भी होली है अभी बात टाइम बाकी है अभी कट इनटू पीसेस स्मॉल में कट करते ओके अभी मिस हो जाता स्टार्टिंग में शेक इट प्रॉपर्ली स्पिन हैप्पी होली sea salt star salt sea salt पढ़ रहा हूँ okay अब All right, this new creation is called Leisure Time Lightning. मेरे को ट्रैवलर बात करने की आदत नहीं है जब भी बात करता है थोड़ा तो वियर्ड लगता है A cocktail made exclusively for champion duelists. Enjoy. Have you added fruit wine? No. There's a subtle saltiness that combines well with the tartness of the fruit and the sweetness of the caramel. Each sip balances delicately on the edge. The color of the wine also fits well with the name and the lightning imagery. Oh. But where does the leisure time part come in? शायद से मैं इस बॉस को I जानता see. हूँ
Its unique Yes, aroma yes, and taste will hold a not spec. try Do guy you Boston. think, if the not chance try were to guy. present itself, you'd be interested in mixing drinks somewhere else? A cafe, for instance. Or mostly for ये Nadia not and try Miss guy Farina's boss है sake. जो अभी Though इमेजिनरी obviously में I'd भी be था more than happy to try. नए वाले में I understand. I won't try to strong arm you. In any thanks to you, whether I'm summarizing the key lessons from my exchange with Miss Eula, or discussing strategy with the Knights of हाँ यही Favonius, बॉस है I'll मैंने be in my सर्च कर best लिया condition. ये तो थोड़ा अनोइंग होने वाला है लाइक अब चलते देखते हैं स्टेशन में क्या क्या है ओके मेरी पिंग गेट नहीं है पर कोई बात नहीं उससे पहले डेली क्लेम कर लेते पहले मैं भूल जाऊँ ऑलमोस्ट रेजिन कैप हो जाएगा मेरा कंडेंस बना लेते हैं इजी इससे बात नहीं करनी थी मेरे को पर चलो Add Ast. Thank you for. Add Astra. वैसे अब प्रीमोस जेम कलेक्ट करने का ही टाइम है अभी कोई मैं लेटेस्ट पैच में फुल नहीं करने वाला लाइक हाँ कलेक्ट तो 21 तो हो गए फुल्स कर ले ये इवेंट अच्छा प्रीमोस दे रहे विन ब्लूम बोलने वाला था इस इवेंट का नाम है पर ये तो है ही नहीं वो ओके मैंने माइक एडजस्ट कर लिया थोड़ा अब देखते हैं ओ ये शायद से ये माउई का से तो हो जाना चाहिए पहले मैनेजिंग करते हो और फिर ये लाइक ये क्यों डालना था इनको ये तो चलता है इसका क्या मेरे पास फिर मैनेजिंग ट्राई कर लेते मैं इसको हिट करता हूँ अच्छे से नंबर 1 हिटर हूँगा इसका मैं ओके क्राउड कंट्रोल शायद से मैंने ऐसे वीकली इसका मैंने किया था ये टीम से हो जाना चाहिए स्टेजियन में मैंने ऐसे किया था फरीना कहाँ गई ओ ये ओके एस कॉफ़ी है मेरे पास एस कॉफ़ी बोल रहा इनफा है मेरे पास लाइक न्यूवलेट नहीं मिला एंड में भी न्यूवलेट मिल जाता तो काम हो जाता है हमारा पर नहीं आना था उसको शायद से नेफर टीम से हो सकता है ये ट्राई करते बैटल में आवाज़ ज़्यादा है तो वो बता देना एक सेकेंड क्योंकि कॉम्बैट में आवाज़ मेरी बहुत तेज Rise with the wind strike. Let's light it up! गुड लक थैंक यू गुड लक बेनेट का बर्स्ट आ गया Teamwork is strength! Light up the blazing sun! हाँ जो उछल कूद करेगा
ओके काजुआ जल्दी The wind knows me. Bring it! वापस काजुआ As one with wind and cloud. वापस काजुआ की स्किल Into the wind. Pyroclastic surge! Rev the end! ये तो आराम से हो जाएगा I'm going in! Try and stop me! लाइक मैं रोटेशन भी ढंग से नहीं कर रहा तो भी हो Wrath रहा है। from the sky! Full throttle! Incinerate! काजुआ Let's light it up! Light up the blazing sun! मैंने बेनेट का ई नहीं मानना था उसके डायरेक्ट Light it up! Teamwork is वो तो dreamwork! जाना चाहिए Wind strider. Pyroclastic surge! ये तो आसान था रोटेशन भी ढंग से नहीं करनी पड़ी ओह किस पे काम आ सकता है किसी पे नहीं क्रिट डैमेज और क्रिट रेट है ये काम आ सकता है डीपीएस कॉलम बिना बेल्ट अटैक नहीं चाहिए तो भी ओके ये टीम देखते हैं अब ये भी हो जाना चाहिए आसानी से यस तो स्टार्टिंग में ही शील्ड लगा लेते हैं ना ये डैमेज खूब देता है ना आते वक्त दे इसकी गंदी बात है और मेरी पेन इतनी गंदी है कि मेरे को 4 बार बटन दबाना पड़ रहा है सब कुछ It all adds up. Forest, quick cleanup sequence Can't hide the truth. The deception ends here. No more lies. It all falls into place. अब ये वापस शील्ड लगा लेगा कुछ सेकंड में एक और बार जब It all adds up. शील्ड लगा लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे इसकी शील्ड से इनाता है तो लाइक ये कैरेक्टर लॉक करने लग जाते तो डिफ़िकल्ट होता है बॉस ना इसके ट्रेड और क्रिट डैमेज आज पीछे ही नहीं छोटा लग रहा है ईएम भी है ओह ये नाइस है ये चाहिए था मेरे को क्रिट रेट है ना पर क्रिट डैमेज रहता तो ट्राई करते हैं ये वाला ये वाला बॉस तो सबसे आसानी से होना चाहिए तो सबसे फास्ट है Adaptive frosting. परीना है मेरे पास Fulfill our pact. Let my name echo in song. The pinnacle of excellence. अभी थोड़े देर में आर्टिफैक्ट रोल भी करेगा मेरे को उनकी किस्मत देखनी कैसी रहेगी ऑलमोस्ट 10 मिल गई
हाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। 55 seconds. Nice. Okay. Okay, physical damage, HP नहीं चाहिए। ये तो हो गया। मेनेसिंग तो इसी था। आर्टिफैक्ट रोल करते रुको, 1 सेकेंड मिला था आर्टिफैक्ट। नेफर पे हो गया ये वाला। डैम HP गया, कोई बात नहीं, एक पैड रोल से कुछ नहीं होता। EM गया, 2 पैड रोल मान लो। अभी भी होप है। अब होप नहीं है। लाइक इसको फीड कर देते हैं। ये क्या कर भी क्या रहा है, इसकी एग्जिस्टेंस ही क्यों है। ओके कुछ भी नहीं मिला। अच्छा रोल में किस्मत खराब है आज। मेरे को और कौन सा मिला था, 1 सेकेंड बैक से ही देख लेते ना। न्यू आर्टिफैक्ट में JEM क्रिट रेट नाइस। मैंने क्या आर्टिफैक्ट फीड किया इतने, मैंने तो देखा भी नहीं। ओके नाइस नाइस, अच्छा है। और मेरे को कुछ दिन पहले मेरे को ये आर्टिफैक्ट मिला था, ये भी ना अच्छा था। ये फेदर मेरा हाईएस्ट CV फेदर है। Yesterday I got like कुछ दिन पहले मिला। ये लाओ ना डिफॉल्ट पे। ओके ठीक है वो काम चल जाएगा। और कौन सा मिला था, और कुछ नहीं मिला था ना हमें। ये मिला था इलेक्ट्रो डैमेज, उसके बाद में करेंगे। और ये HP मिला था। HP किसी पे काम नहीं आएगा तो अभी करते ही क्यों है। चलो फेलेस करते हैं। डायर नहीं, डायर का तो हम सोच भी नहीं सकते, गरीब है। ओके ये टीम से काम नहीं बनने वाला पहले सेट में। 2 मिनट, शायद से जिलोनिन रॉन्ग सेट पे अभी मेरे। हाँ जिलोनिन रॉन्ग सेट पे ही है, क्योंकि मैंने टेनेसिटी भी रखा था ना जिलोनिन को। हाँ इसको उस पे करूँ, हीरो सेट पे। डिफेंस कहाँ है, ओके ओके लाइक यही बेटर है, वे बेटर है वो भी। डिफेंस 3000 ओके
काम चलना चाहिए। यार कितनी थी यार कम है, पर फवोनियस है ना। फवोनियस नहीं है, फवोनियस कहाँ था इसका। उस रन में बिना यार के जिलोनी यूज़ किया हमने। 2 मिनट काजुआ भी देख लूँ मैंने। काजुआ सही है, ठीक है। ये इस पे मैटर करता है या मैं कुछ और लगा दूँ? ये लगा दूँ, ये लगा देते। ओके, अब ट्राई करते हैं। हो तो जाना चाहिए। Burn it down! Bring it! डॉज किया उसने मेरा अटैक। लाइक बेनेट का Let's light it यार up! कितना है? Going in! Light up the blazing sun! मैं उसको डैमेज भी नहीं दे पा रहा। ओके काजुआ, Everybody stand back! Wrath from the sky! Incinerate! Incinerate! Light it up! अरे थोड़ा लेट है। Bring it! Let's light it up! Teamwork is strength! मेरे को काजुआ भी नहीं। Light up the blazing sun! ये तो हार्ड होने वाला है। I'm going in! Wrath from the sky! Bring it! इसको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि कब ये करने वाला है। Rise with the sun! Light up the blazing sun! Incinerate! Wind strider. देखते और दूसरा बॉस देखते तब तक। देखते ये बॉस, क्योंकि मैं वो बॉस तो कर सकता हूँ। पहले टीम देख लेते सब। ये डैमेज कूदेगा और ये लूना चार्ज क्यों नहीं हो रहे? Defensive mode engaged. No more lies. It all falls into place. It all adds up. इसके HP कितने हैं? लाइक Moonlit night for all. केयरलेस और मिनिसिंग में डिफिकल्टी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। Can't hide the truth. It all falls into place. Let's see tomatoes. Forest, protect us. Insulation chamber deployed. It all adds up. Surge. Poor last left. Ultimatum protocol. Converge. आए तो मैं Cleanup sequence थोड़ी initiated. देर तो कर लूँ। Flame.
वैसे ट्राई करने का ज़्यादा मतलब है जब तक कैरेक्टर सिलेक्टेड नहीं है। It all falls into place. ओके वैसे तो एक कल ही करेंगे अब। आज इवेंट कर लेते, कल स्टेशन में वीडियो देख के आऊँगा कैसे क्लियर करते। लाइक गाइड्स बनाते ना वो लोग, वही देख के आएंगे, उससे टिप्स मिल जाती है। ओके ये इवेंट करते हैं। लाइक पेन है ये स्ट्रिजन ऑनस्लॉट मेरे को अबेस रिलैक्सिंग लगता है, और फिर इमेजिनरी थिएटर। और ये क्या हो रहा है? ओह फ्लिंस का वेपन, तुम्हारे पास पहले से फ्लिंस था क्या? मैं टोटली फॉरगेट कर चुका हूँ, बहुत पहले मिले थे ना, तो याद भी नहीं अब तो। हाँ नॉट के वेपन बहुत अच्छे कैरेक्टर्स के, नेफर का भी वेपन बहुत अच्छा था। लाइक ह्यूज बफ दे देता है उनको। और पॉइंट मिस हो गए मेरे से। फ्रेंड्स को कितने परसेंट बफ देता है उसका वेपन? लाइक विदाउट वेपर फ्रेंड्स लाइक फॉर नेफर इट्स 5%, मेरे को याद है। नाइस, अभी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ओह तो मैं नॉर्मल अटैक यूज़ ही क्यों करूँगा? ये इतनी इंसेन स्किल देती तो अब नहीं आ रही। रिफिल करो, और पूरे अटैक खाया मैंने उसके। ओके चलो वापस। वापस ये क्या है? कॉइंस इम्पोर्टेंट है। ओके गोल्ड पे पहुंच गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डन। यह इवेंट की स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, मैंने कल की थी। पानी के नीचे अंदर जा सकते नहीं जा सकते? ओके मॉन्स्टर
वाह, मैंने डॉज करते करते दोनों ही खा ली। चलो जल्दी की आगे। The equipment character हाँ, नाइस वेपन तो नाइस है, लाइक 5% एडिशनल डैमेज, 36 हाँ 36%। लाइक मेन सबस्टैट क्या था इसका? मेन सबस्ट्रैक्ट क्रिट रेट या क्रिट डैमेज होना चाहिए ना वैसे तो। अटैक भी चल जाएगा। ओह क्रिट रेट नाइस, वेपन अच्छा बहुत। So ओके, इन गेम जाके चेक करता हूँ मैं उसमें सबस्टैट में। वेपन बैरल में तो दिख जाएगा ना ये। मैंने सुना है वारका का भी वेपन अच्छा था उस पर ही, पर वारका इतना अच्छा नहीं। वारका का सबसे लंबा है अपने इन गेम में अब। ट्राई अगेन दबा दिया मैंने आदत से। एग्जिट करने दो प्लीज, थैंक यू। वेपन बैनर ये रहा, इसके बारे में। और elemental burst equipment character increased by 36% after targeting lunar action, the gain 28% और for 6 seconds। ये भी ड्यूरेशन भी बहुत लॉन्ग है। they will regain 12 energy, elemental energy can be restored, let's say 14 seconds। okay, क्रिट रेट का वेपन है, नाइस 4.8 क्रिट रेट। अच्छा वेपन है ये फिलिंग्स के लिए। वैसे बेस्ट इन स्लॉट ही होगा ये। लाइक वारका पिक का वेपन क्रिट रेट 50-50 तो नहीं आ रहे ना, 50-50 जीत गए ना। ये बैनर में कौन ही फुल करेगा। ओह वन स्टैंडर्ड विश, C2 वाका, हाँ C2 अच्छा था। C2 हमको ट्रायल में दिया था जब स्टोरी खेल रहे थे इसकी।
दोनों इवेंट की स्टोरी में भी दिया था C2। वारका का कैरेक्टर डिज़ाइन एक बार बहुत अच्छा लगा। 15 पिटी इंसेनली लकी बोलते हैं गेंशन में, जो आर्टिफैक्ट में लकी नहीं होगा वो विशेष में लकी रहता है। लाइक मैं आर्टिफैक्ट में लकी हूँ तो मेरे विशेष बहुत घटिया ही गए। ओके अब क्या कर सकते हैं। Oh, look at the new artifact I got. It's a new lit flower. ओके मैं 2 मिनट के लिए डर गया था, क्या हो गया। हाँ ओह ये वेपन स्किन मिली नहीं। आर्टिफैक्ट देखना है ना, मैंने तुमको ऐड किया था क्या। मेरे को तो याद भी नहीं। यूआईटी एक सेकेंड, यूआईटी भेजना देखते हैं। ओके इसको कॉपी कर लेते हैं। सर्च यही है। और ये 95 भी हो गया। नाइस feather flow. Oh, really nice. Insane luck. Insane luck. Insane. Like godly. रेशो कितना बना। ओ रियली नाइस। 46.6 की सीवी हुई ना वो फ्लावर की। और फेदर की क्या। ये 42 की सीवी हुई इसकी। नाइस ये भी अच्छा है। After farming my second 40 CV. नाइस मेरा भी सेकंड ही था जी। वैसे न्यूलेट का ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। इंसेन इंसेन पर सब स्टैट इतने। सब स्टैट में ठीक है चलता है, पर सीवी ज़्यादा है ना इस। HP परसेंट कॉम्प्लीट ठीक है। ओ हाइड्रो लगाया नाइस। C1 है सही है अच्छा है। अब और अच्छा हो गया। और कोलम्बिना तो बिल्ड हो गई होगी अभी तक, तो सपोर्ट ही बिल्ड होती है ठीक है। नाइस मेरे से अच्छी है बिल्ड। नाइस 40 हाँ
Other is on Zhongli Feather. Zhongli Feather. Oh, ये बहुत अच्छा पीस है. सॉरी आर्टिफैक्ट लग तुम्हारा वेस्ट है. 49 सीवी की है. नाइस. इंसेन. ये सब मेरे को क्यों नहीं मिलता? Damn. Oh, friends. Nice friends. अटैक कितना है? वेपन अभी तक अपग्रेड अभी ही मिला होगा ना? ओके. ना ओ नाइस. ये भी अच्छा है. 12 पर डिफेंस पे चला गया थोड़ा. नाइस. ये भी अच्छा है. कलर चेंज हो सकता है ये. लाइक फरीना तो ओ रेशो मस्त है फरीना का. नाइस. रेशो बहुत अच्छा लगा मेरे को देखने में. C0 टैलेंट 10-10. नाइस. 10-10 करके रखा है फरीना को. अच्छा है. न्यूलेट का तो पीस इंसेन था. न्यूलेट इंसेन बिल्ड. मैंने सबसे अच्छा न्यूलेट बिल्ड देख लिया आज लग रहा है. ओके. मेरे को क्या करना था? अच्छा इवेंट कर रहा था. मैं तो न्यूलेट के पीस देख के ही भूल गया क्या था. ओह ये इवेंट तो हो गया मेरा. हो गया ना ये इवेंट. ये हो गया. हाँ गुड बाय. इधर से कुछ आवाज़ आएगी? नहीं आएगी. नहीं आएगी. आई वॉन्ट टू C6 न्यूलेट. ओह C6 न्यूलेट. मैंने किसी का इमेजिनियम में यूज़ किया C6 न्यूलेट. रियली नाइस. ओपी एकदम. मेरे को कभी C6 फरीना करनी है. लाइक C2 है अभी. फाइव ईयर एट मैक्स. 5 ईयर ये गेम चलेगा भी तो भी तब हो जाएगा. मैं सोच रहा हूँ हर फनीरा के बैरन में फरीना निकालू एक. तो ऐसे एक ना एक दिन तो C6 हो जाएगी. ओके मेरा इवेंट ख़त्म हो गया. I have this random guy in my friend list that this dude has every girl character at C6 R5. Oh, मेरे भी फ्रेंड लिस्ट में एक ऐसा है. लाइक पर मेरे में मैन का है.
लड़कों का करके रखा है इसने। और हाइड, अब क्या ही कह सकते हैं। वो कोई और है, लाइक CN प्लेयर रिच रहते हैं। इसके भी, हाँ ये क्लोज है। ये C6 अरीना इसकी। और कौन था? और फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने इमेजिनियम थिएटर किया, वो भी लूनार डिफ़िकल्टी पे। वो उनके लिए बनाई है टायर वगैरह, हमारे को छूने का भी अलाउड नहीं। टायर को हम देख भी नहीं सकते, वही देख सकते। और मेरे को फर्स्ट कार्ड मिला अपना जे। हैंगमैन इमेजिनियम थिएटर किया था मैंने लूनार वर्जन पे। इधर से पता चल जाएगा ना कौन रिच है मेरे फ्रेंड लिस्ट में। इसके पास 2 6 है। एक था ये देखो, ये वही प्लेयर है जिसने मैन को रिच करके रखा है। इसके पास कोलम्बिना भी 6 है, फरीना भी, जियाओ भी और क्लोरैन भी। लाइक CN प्लेयर को फ्रेंड करना ही पड़ता है, तभी इमेजिनियम कभी क्लियर होता है। चीन एंड कैचिंग, अभी तक मैं इतना हारा नहीं हूँ, मेरा एक भी C6 नहीं हुआ है, पर मैं क्लोज हूँ। मेरी ये क्लोज 2 हारना है 2 बार। और मिजुकी में 1, चीची में भी 1 बार, 1 कॉन्स्टिलेशन। और कौन सा था, कचिंग थी ना, कचिंग में भी C1। और किससे 50-50 आते हैं, मैं तो भूल भी गया। अच्छा डिलूक C0 है। ये मेरा पहला DPS था। और तो कुछ है भी नहीं, पर मैं वेपन से बहुत आ रहा हूँ। लाइक वेपन से बहुत आ रहा हूँ मैं। ये भी आ रहा हूँ, ये भी आ रहा हूँ, ये भी। लाइक 4 वेपन है, इनमें से 2 ये स्टैंडर्ड से मिले मेरे को, बाकी सब मैं आ रहा हूँ। यार नेफर का वेपन इंसेन है। कोलम्बिना DPS बिल्ड करूँगा तो इस पे डाल सकता हूँ मैं। और मैंने फिशिंग की है, ये देखो 2 वेपन, दोनों फिशिंग के R5। ओके, आगे का इवेंट कर लेते हैं। वैसे ये कल ही खुलेगा तो कल ही करेंगे। आज क्या कर सकते हो।
ये भी फ्लावर लेके रहूँगा मैं, फेदर। लाइक ये वेपन स्किन कितनी नाइस है। पर चलो 41 डेज के लिए ये उनके पास तो इतना भी दुख नहीं होता। Chichi and Mona are C4, Diluted C2, ADI C1, Tenari C3। कितने बार 50-50 हारे हो, लाइक क्रेजी अमाउंट। मैंने तो डिया नोटिस भी नहीं की। हाँ मेरा डिया C2 है, डिया C2 है। मैंने पर एक शायद से मैंने एक लिया था वो इवेंट से, समर इवेंट जो भी आता है फ्री 5 स्टार देख के जाता है। और टेनारी है ही नहीं मेरे पास। टेनारी, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस किया। Is very strong at C6. Oh, 6। लाइक मेरे को इस बार लेना था स्टैंडर्ड बैनर से, पर ले नहीं पाया मैं जो आया था। और इसमें क्या सिलेक्ट करूँगा अब मैं? कुछ दिन में ये भी एंड हो जाएगा मेरा पूरे 5 स्टार। मोना कह सकते, मोना कह सकते, मोना C2 अच्छी है, मोना C1 भी अच्छा ही है। लाइक मैंने जीनो और हुटाओ का तो रिडीम कर लिया। मेरे को भी खरीदना 90 से तो ऊपर ही ले जाना है, इसलिए मैं जीन को मैं अपग्रेड करे कॉन्स्टेलेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। लूज़ करूँ तो जीन से ही करूँ बस। और किसी से नहीं। और नेक्स्ट पैच में मैंने सुना है डॉर्मेंट फूट आने वाले हैं। कौन कौन ज्वाइन करना चाह रहे हो? जस्टर एंड यूस्टर। ओह चलो ये इवेंट ही कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ काम भी नहीं है। लेवल 100 करने की कोशिश हो रही है। Mr. Honorary Knight? Oh. Yippee! It's you! क्ली लेवल 100 में डिफरेंस कितना बढ़ता है न्यूलेट में? वैसे कूल दिखता है। क्ली Auntie Eula told Klee that Miss Hertha had found someone amazing to help out. Oh. Seeing you here, Mr. Honorary Knight, Klee knows this must be the best drink stand in all of Tibet. मेरे को नहीं लगता अब लूना रिएक्शन और ऐड करेंगे ये लोग। हो गया बस इतना है। शायद से ऐड कर सकते हैं। लूना और वेपराइज तो खूब ओपी हो जाएगा, वो तो ऐड नहीं करेगा। लाइक आई थिंक लूनर फ्रॉस्ट हो सकता है, लूनर फ्रॉस्ट भी।
या मेरे This को लगता है stand isn't फिजिकल का कुछ already ऐड the करेंगे ये best. लोग, फिजिकल डैमेज का। लूनार फिजिकल डैमेज, शैटर वगैरह। Well, out of all the drink stands Clee's ever visited, Mr. Honorary Knights is easily the best. डैम। And no matter what drinks Mr. Honorary Knight makes, Clee will definitely think they're yummy. लाइक सही में अभी के इमेजिनरी में यूला दिया और मेरे को यूज़ भी करते नहीं आता उसको अच्छे से। Oh, you want me to be mean? But Clee मैंने could उसको never be mean डिफेंस to वाले you. राउंड में रखा और टाइम का वेट किया एंड होने का। Let me think. I know. I'll pretend to be Albedo. Whenever Albedo reviews Timaeus' work, his face goes super serious. And Clee can hear every word पर he सोचो says. कि फिजिकल ऐड करेंगे, कोई यूज़ नहीं करता तभी। Polina was the worst season of Genshin career. C1 पे वाओ, मे भी बफ मिलेगा। मीका के साथ बफ मिला था ना। एंड टाइम पे मीका के साथ बफ मिला था अभी अभी, पर उतना भी बफ नहीं था वो। पर लूनर रिएक्शन इनका आएगा तो बेस्ट है, नए रिएक्शन के साथ इन्वॉल्व भी हो सकते हैं अब। Get ready for Clee's super amazing order. लाइक जियो वाज वर्स्ट अभी, उसके बाद फिजिकल था। ओ क्ली को अभी बफ मिला, क्ली बहुत अच्छी हो चुकी है अब, लाइक मज़ा आता है। These past few days, I've been having such a blast with Mom all day long. It's been so much fun. Even being sent to solitary confinement couldn't wipe the smile off my face. You will not. So, Clee wants to order a fair weather frolic. और इसको Anything कौन like a रिग्रेट करेगा bright फुल sunny करने का, day will कितनी क्यूट है। definitely put Clee in a super duper mood. I wonder what it'll taste like. All baby characters. Oh yeah, nice. वैसे इस गेम में स्मॉल कैरेक्टर्स कम ही है। ली के लिए ड्रिंक बना रहे ना। Cut into small bits. ओके, मेरे पास नाहिदा नहीं है, नाहिदा मेरे को पुल करनी थी, पर वो हमेशा एकदम रॉन्ग टाइम पे आती। लाइक जब मेरे को पुल करना था तब हूटाओ हो गई, हूटाओ को पर मेरे को पुल करना। हूटाओ फिर फरीना आ गई उसके साथ, नाहिदा के साथ। लाइक नाहिदा का वर्स्ट पैनल टाइम है, नाहिदा और न्यूलेट का। न्यूलेट के साथ भी बहुत गंदा होता है। न्यूलेट मेरे को याद है नेटलाइन में सेकंड पैच में आया था, सेकंड हाफ में, और उसके नेक्स्ट अपडेट में माओगी खा रही थी।
बुलेट भी पुल कर नहीं पाया। मैंने सोचा मावी का ही पुल कर लेगी। ओ डोरी डैश सेल। हाँ मेरे पास भी मोस्टली सब भी है, बस नाइटा को छोड़ के स्मॉल कैरेक्टर्स में। Your Fairweather Frolic is here. Go on, give it a try. Wow! So, a Fairweather Frolic is this color? Purple sky. Is it supposed to be a bright, shiny night? Naida C2. I think controversial take है मेरा, पर लामा ने पावर क्रिप कर चुका है नाहिदा को। Clee will take a sip Not first. power grip. Then you can think about it more carefully. थोड़ा तो उसको बैकलाइन कर दिया नाहिदा को। लामा C2 हील करता है वो भी अच्छा है। I hit them spectating used to be my favorite before starting king. लाइक मेरे फ्रेंड आई हिट them बिल्ड करने की कोशिश किया, उसको पूरे आधा साल लगा बिल्ड करने में, तो भी अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाया। उसने बैटल पास का वेपन खरीदा और भी बहुत कुछ किया उसने। Yummy! Both sweet and sour. तो भी उसका डैमेज इतना नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए था। If Clee drank this while eating grilled fish, I could definitely gobble down 2, or 3, or 4, or even 5! Oh, top 1. Nice. Oh. Hey. But one drink isn't enough. Clee wants to try Check. a drink that Check tastes तुम like क्या ही cake. करेगी, बहुत अच्छे बिल्ड है तुम्हारे सारे। Clee doesn't know what drink to choose. Why don't we decide together, Mr. Honorary Knight? ओ मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ से, मेरा खासा खुला है और मेरे को पता भी है यूआईडी। वे ओ नाइस। अभी तो टॉप 3 पे दिखा रहा है, पर वो कोई दूसरा बिल्ड होगा। लाइक 6.7 CV, 46 CV का एक डाला है फ्लावर। नाइस, फेदर भी अच्छा है उसका। Three square meals? Clee often eats 5 meals a day. Sometimes 5? even 7. सही बात, अंडर एज है, जूस पी सकती है और क्या। Adventuring takes a lot of energy, and if I eat too much at once, I can't run so well. So, But ये it's तो elf better है to ना। eat lots of smaller meals. मे बी 100 years old हो ये, हमें क्या पता। Albedo used to prepare all Clee's meals, and my lunchbox But was 100 always years old arranged तो so नहीं होगी। neatly, just like a pretty Albedo ही painting. 500 years old है। और क्ली का फादर हमें पता चल गया, ओके नाम से था कुछ।
बहुत इंटरेस्टिंग था वो तो, उस पे लॉ बना था, केविन कस्लानो नाम था उसका। When Albedo's busy at Dragonspine, Klee goes to eat with the other Knights of Favonius. लाइक ट्विटर में हमें को इंट्रोड्यूस किया था ना ट्रैवलर्स को, उसने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में। और वो दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है। डिटोरियो ने उसका प्लान फेल कर दिया था फिर। I'm excited to get next patch। नेक्स्ट पैच में लावा आ रही है। Kaya's camp is usually the neatest, while Amber sometimes camps in the मेरे को नहीं पता था trees. नेक्स्ट पैच में It's लावा। so much fun. मैं भूल भी गया and था। Auntie Hertha makes the best food. चलो कभी और से वन करने की सोचेगी लामा को। When my mom comes Like, back, मेरे को there will हीरा be even चाहिए। more yummy food to eat. There's this one dish where she takes loads of different fish and makes them into little pudding cubes. It's called Rain. Her Chococo Crunchy slices are fantastic too. It's her newest creation made with chocolate and cookies. They're a little bitter, but they're crunchy. They smell scrumptious and they have a really sweet aftertaste. ओह लामा नेफो, नाइस लाइनअप। जिनने लामा पुल की और नेफर पुल नहीं की तो आप कर सकते हैं। Whenever I eat them, I feel मेरे को so चास का पुल full करनी of है, बहुत energy. यूजफुल है वो चास Next का। time, Klee will have to bring some for you to try. लाइक नेक्स्ट पैच तो चास का ही पुल करूँगा जब भी आएगी वो। लामा Yeah, when Klee gets back home, I'm gonna eat. Klee used to eat cake after dinner, but Master Jean said it's too sugary, and it's not good to eat sugary things before bed. Apparently, it makes you chubby and gives you toothaches. ये इवेंट बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है अब इन सब से बात करने में। मैंने 2 साल से खेला तो भी। So, Mom got some advice from Auntie Barbie, and now she gives me nuts instead. She says they help my brain remember things better. Surgery. Okay. Damn. Nuts don't have much flavor. It's like chewing on grass, but they're okay if you add a little salt. Sounds good. Sugar नहीं करना ज़्यादा। Yeah, Mom gave me an amazing book recently. She said I have to read one chapter every night, learn something useful, and then go to bed early. That book taught Klee how to make something called propellant. Now Jumpy Dumpty can go Wow. and bounce Upgrade. even higher. Damn. बम में अपग्रेड मिल गया इसको। It's not hard at all. In fact, it's a lot like making bombs. You just have to be careful when trimming it down. It's like sharpening a pencil या that could क्ली का suddenly इंग्लिश go वे भी बहुत अच्छी है। boom. सबसे बेस्ट ये तो डोरी पे जाता है फिर। मेरे को डोरी की वे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है डोरी की वे। एक्टिंग अच्छी करती है। Bedtime's an important part of Klee's schedule, too. Mom sits by my side and tells me all kinds of wonderful stories. She has a lamp made of gemstones, and when she turns it on, it goes kapling and lights up the ceiling. ओह, डोरी की, हाँ डोरी की वे मैंने कहीं सुना था, इंडियन है। Yeah,
When something happens in the story, the lights on the ceiling make pretty pictures. Sometimes Mom falls asleep before the story ends, so Klee has to tuck her in instead. क्ली की वे इंडियन है। ओह नाइस। As soon as Klee learns how to use the lamp, I can come tell you stories, Mr. Honorary Knight. I'll be waiting. Klee has memorized so many wonderful stories, enough to make everyone happy every day. पूनम बस पूनम ओह शायद से मैंने इनकी वॉइस पहले भी कोई एनिमे में से सुनी है। कोई तो है नाम ही याद नहीं आ रहा। Nice candy on the table. This stuff? Mom taught me how to make it using the alchemy bench. A dash of sugar, then a lot more sugar, then some flowers from Mom's friend in Fontaine, star honey from Auntie Barbie, and finally, some magical jam from Auntie Tavia. Put everything together on the alchemy table, wish for the shape you want, then recite Mom's incantation, and poof! Todoko shaped candy! एलिस का भी डिज़ाइन मेरे को खूब अच्छा लगा। एलिस जब भी आएगी पुल करेगी। Klee can give you some Dodoko candy too if you want. And if you really like them, I can even teach you my mom's incantation. That way, you could make your own candy whenever you want. Like, हमें नहीं पता क्ली भी डिसेंडर हो सकती है। टेक्निकली ये डिसेंडर है, इसके फादर बाहर जा चुके हैं रिवार्ड के। If you get stuck, remember to come ask Klee. When it comes to magical candy, I'm an expert. Okay. ड्रिंक बनाने का टाइम। Associate with fruit candy. He likes sweets. Okay, topics हो गए पूरे। यप, क्ली बहुत क्यूट है। फेवरेट कैरेक्टर है वन ऑफ द मेरे में। लाइक हो गया। अच्छा, मेरे को वापस बात करनी है। एक और टॉपिक ऐड हुआ ना, ये रहा। Oh yeah, Klee still wants to eat sweet things, like cake, for example. Maybe we could just go easy on the cream? Or add more fruit? Oh, right! That friend of Mom's who's always wearing glasses gave her a big bag of Fontanian Buell fruit. They're so round and rolly. Klee ate a whole bunch of those, and they were super sweet. But Master Jean said it was okay, because sweet fruit isn't the same as sweet sugar. So if Klee really has to eat nuts, maybe I can just soak them in some fruit juice first? पूरा आइडिया दे रही है क्ली तो बनाने में कैसे। ओके, बन गया। Start mixing. Thumbs up. Yeah, that was quick. Klee's looking forward to finding out how tasty your next concoction is. Win क्ली। एस्को क्ली के लिए बहुत अच्छी ड्रिंक बनाते हैं। मिल्क, फर्मेंटेड जूस।
ओके अब इसको कितने कट इनटू एनी पीसेस स्मॉल में कट करेंगे नाइस अब शेक with any intensity प्रॉपरली शेक करके इसमें बहुत फ्रीडम दिया है करने के लिए लाइक मेरे को देखना है कि डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं क्या मैं शेक हार्डली करूँगा तो कुछ और बोलेंगे यानी कहाँ से कर इसमें देते हैं ये अच्छा दिख रहा है Added over to nice. Ta-da! It's done! I just know you're going to love this new creation. Wow! There's Dodoko candy on top! Damn, so cute. There's so much orange in this cup, and Dodoko looks like he's lying on top of white fluffy clouds. And the weather inside looks much better, too. Would you like to taste? Yummy! It's so delicious! Klee has to drink slowly. I can't just gulp it down, or I'll miss all the yummy flavor. Mr. Honorary Knight, this is amazing! It's like you mixed sunshine with juice! Klee was so tired from playing, but now I feel refreshed. And warm. And हाँ मेरे को भी मम्मी की आवाज़ से used to नहीं है oh, इधर के लिए मेरे आवाज़ you're the best, Mr. Honorary Knight. अब Really? Let me think. When the weather's nice and Dodoko's happy, Dodoko will want to sing, right? Yeah. And when Dodoko sings, Klee wants to sing too. So, let's call it Dodoko's Duet. nice what a wonderful name Thank you! And thanks for making such a yummy drink for Klee. Klee's gonna go tell Mom that the best drink in Mondstadt right now is Dodoko's Duet. I pass you this. Klee's gonna write down Mom's incantation and give you a copy, Mr. Honorary Knight. Then you should learn magic too, so you can make all the candies you want. See you next time. Bye bye next time ओके कैसे हो गए एक और बचा है ग्रैंड मास्टर हाँ ये बात पे करेगी वापस आ जाएगी इवेंट तुमने इवेंट कंप्लीट कर लिया इवेंट में बहुत ज़्यादा ही क्लियर दिखी थी हमें और कुछ है मेरे कोई फ्रेंड्स ने किया इनने कर लिया इनकी टीम क्या है ओह सिलारी रख सकता हूँ मैं C2 एवर वो और ये टीम ओ यहाँ स्कर्क नहीं है और ये C2 वाओ ओके
और बचा है ना, वो वही कंप्लीट कर लेते हैं। इवेंट आज पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं। So Hertha's even roped our honorary knight into helping with this little venture. Varka. Now that I'm finally free to relax, it's time to start doing just that. Can't wait to see your skills in action. Give me something that goes well with casual conversation, but still packs a punch. Of course they don't clash. A drink that packs a punch means you have to drink it slowly. And if you want to chat, then it has to go down smooth. So, something with a sweet aftertaste. A conversational connoisseur requires the perfect balance. The most suitable choice on this menu would be the Thorny Lake. Oh. It's a drink with a real kick that you can find in almost every bar. हाँ, इसके बाद इसका 2 मिनट। मुझे मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है कि इसकी फेट हमारी फेट थी, इसको डिफीट करना था डिवालिन को, ना कि हमको। लाइक टेवेट अपना रूल चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट पीपल को डिफरेंट फेट दे सकते हैं। It's not enough to know the recipe, though. The key is in the mixing. Some bartenders choose to stick to the tried and tested basics, while others like to add their own personal flair. प्रोफेशनल आ गया अपने पास। That's the spirit. Now, show me what you've got. Okay, fire, fizzy water, and cocoa. Cut into smaller bits. Wait, miss हुआ. Wait, miss क्यों हुआ? ओके, रीडू करने का टाइम मिलेगा, मेरे को लगा नहीं मिलेगा। शेक हार्ड। Grandmaster, I hereby present you with this thorny lake for your enjoyment and assessment. Okay. Well, the color and aroma are certainly on point. But as for the balance of flavors, I'll just have to taste. Nice, पूरा एक ही बार में Not पी गया। bad. You haven't overdone or skimped on any single ingredient. Though, unfortunately, it's a little too, polite for my Perhaps I should have said modest. You followed the formula to a T, but if anything, you've played it a little too safe. Oh. Were you worried that deviating just a little might disappoint me? Hey, we fought side by side and dealt with things that even gods were loath to meddle with. Ours is a friendship forged in the margins between life and death. That said, if you ask me, you can ditch the nerves and work your mixologist magic. I'm looking for something that shocks the senses. Mull it over. There's no rush. We can chat while you think. Who knows? You might just find some inspiration to mix in with your magic. Speaking of this garden, it brings back memories of something that happened many years ago. When I was young, I like to find ruined guards to test my fighting skills, both armed and unarmed. Once, I failed to take down a stray missile, and it ended up destroying a watchtower on the city walls. Damn. As punishment, I had to run 50 laps around the city, repair the watchtower, and help rebuild the shattered walls in this garden.
Indeed, among the misadventures of my youth, this is one of the most memorable ones. Mostly because that day, Crepus saw me covered in dirt. He took 2 bottles of 100-year-old wine and sent D-Luke, who looked even younger than Mika does today, to work out a clever way to get rid of Faru, who was guarding me. It was so hot that day, I could swear I was about to pass out. On a whim, I picked some mint leaves, put them in one of the wine bottles, and the result turned out to be surprisingly tasty. After Crepus tried it too, he was full of praise. He even wrote up an official recipe for my spontaneous creation. His customers loved it. Several summers passed. Yes, Faru retired years ago, but he's still... he's a stubborn one. When I get the chance, I'll have... Well, let me think. Sometimes, in this regard too, you've taken quite a tentative approach. Why not be a little bolder? Oh, मैं गिरने वाला था अभी. Fast forward कर लेते हैं थोड़ा. You can't... Pretty awesome, huh? It's like a hammerhead. It was a gift. They've been waiting to have a good drink with me. I'm the Grand Master, after all. So it's only fair to my subordinates that I drink a teensy bit more per round. Of course, some of them have been training. Take Hazelnut 3 and Hazelnut 5, for example. Both were skilled warriors who helped me deal with error. At today's after-work cooldown, they insisted on trying to keep pace. I've already told Jean that I won't be approving their leave request for tomorrow, no matter what. It's a treasured place that the Knights of Favonius have maintained for years. I heard that while the expedition was underway, you were a great help in giving those left behind the... Sometimes, I look through the photos I've been given from those events. Though unfortunately, there aren't enough to include every... My conclusion is that Mondstadt needs to do more to popularize the camera. Oh. Marathon is still on. Okay, अभी requirement unlock नहीं हुई है. Who knows? If I were in charge of organizing events, Oh. well, I suppose everyone would revolve around fine wine, or at the very least, there would be some sort of tasting. And for example, we could go all in on this drink stand and open it to the whole city, with every company of the Knights selecting one or more mixologists to compete against each other. I just It's only a thought. Can't let things get too out of hand. If I were to actually throw a grand banquet, Jean would come after me with her sword drawn. Even Frederica would launch a punitive expedition. While in Nodcry, we had a rule that knights must never get drunk while at their posts. Otherwise, it could lead to dereliction of duty, with serious consequences. That's Exactly. fine. As expedition members return to their companies, my hope is that this rule will gradually spread to everyone in Mondstadt too. Just like firewater and Smedina. Wait, I need These to drink Nodcry delicacies have made their way into Mondstadt's households and become part of people's daily lives. Young people need to learn restraint. At the end of the day, no one should be biting off more than they can chew. Unless it's someone near my level, they shouldn't even be thinking about enjoying a light buzz when they've still got work to do. Most people would just end up a whole lot drunker than they'd like. मेरा कैमरा काम करना You बंद should कर come practice with me on weekends. Trust me, once I've drunk them under the table, they'll be swearing off wine for a whole week. Okay. तभी तो सोचो यूट्यूबर मॉडल मेरा हिल क्यों नहीं रहा. कितने देर से बनता है? Yes. Start mixing. Huh? Whatever you're about to do, I've... Fire, sand, ferment. Cut into any.
स्मॉल बिट्स में शेक कर लो शेक जेंटली है थोड़ा सा ही शेक किया इसमें जो नाइस ये बाहर का स्पेशल हम गॉबलेट लेके आए ये तो ड्रिंक करने के लिए ऐड एनी गार्निश लेमन ये लगाते हैं ये अच्छा दिख रहा है ओके Here you go, Grandmaster. A cocktail just for you. I guarantee you won't find this one too polite. Such a spirited drink. How did you make this? Well, that burning scent of fire water. Oh, it's as if the very air were about to ignite. This is more like it. Perfection. It's clear that once you let go of your inhibitions, your talents really shine through. oh मेरा वीडियो That बना first तो hint of दिखा था। mint is like a cooling feint that masks the fire water underneath. By the time the sweetness dissipates, the fire water is already slipped अब in काम कर रहा होगा behind अच्छे your से। guard, ready to deliver a powerful strike of intense flavor. Oh, I think that's the most ingenious part. Firewater's greatest flaw. Okay. It's hard to imagine something this good was created by a mixed iron wolf. Perfect. Oh, I have an idea. Why do we... No time to waste. I'll go have a word with Glenfiddich right away. नाम चेंज हो रहा है वो दुकान का नाइस और शायद से आज के लिए बस इतना ही कल स्ट्रीम करेंगे और स्टोरी ये रहेगी अच्छा एंड का बचा अब Hey there, traveler! All wrapped up for the day? हाँ wrapped Paimon up. hears you did a great job holding down the fort while she was out delivering drinks with Glenfiddich. Yep. Whatever the reason, the honorary knight is clearly one of the most talented mixologists in Mondstadt. Considering how short a time he's been doing this, I believe that someday he has the potential to give the legendary bartender at the Cat's Tail a run for her money. डायोना को I fully support your decision, Grandmaster. The honorary knight has really put in the hard yards. The drink stand will remain open for a little while longer to provide a proper welcome to our returning expedition members. Then, once we locate suitable premises, we also plan to look at operating a permanent service. oh permanent Everyone in the Knights of Favonius will get to drink all the delicious cocktails they like. nice Nothing short of what I'd expect from a true disciple of Hertha. You've really considered this thoroughly, Glenfiddich. Also, if I may, honorary knight, regarding the special cocktails you've developed, would you mind leaving the recipes with us? We'd like to add It them to would the be official menu. selfish not to Paimon feels like there's something you still want to say. let's get Based on your personality, you probably want to introduce the origin of each different cocktail. That way, Oh. customers will know who inspired you to create these amazing drinks. right Paimon right on the mark No problem at all. If you need, I can even have someone draft the paperwork on your behalf to secure you the rights to these new recipes. oh I hope when we recruit some new bartenders, they'll be able to learn from your incredible skills. okay Even if they can't quite match your work, if they could be 2/3 as good, that would still make them industry leaders. nice ठीक है हो गया इवेंट कंप्लीट फाइनली ये इवेंट अच्छा था रियली नाइस इवेंट देन आज हम माइनक्राफ्ट नहीं खेल पाए सॉरी मिलते हैं कल की स्ट्रीम पे कल प्रॉब्लली खेल पाएंगे या स्टेज इन करेंगे कल देखते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल या परसों जब भी मेरा मन करे स्ट्रीम करने का डिसाइडेड टाइम नहीं है तो आज